Hello viewers and welcome back to In My Opinion by समक्ष मल्होत्रा। फाइनली हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक और फिल्म रिलीज हुई है आफ्टर पठान, जिसे आप देखने थिएटर में जा सकते हैं बिकॉज दैट विल बी माय रिकमेंडेशन कि इस फिल्म को आप थिएटर में एंजॉय करें एंड दैट टू विद योर एंटायर फैमिली। आई एम टॉकिंग अबाउट द रणबीर कपूर एंड श्रद्धा कपूर स्टारर टू झूठी मैं मक्कार, जो आज ही रिलीज हुई है। अब रोम कॉम्स की बात करें तो रोमांटिक कॉमेडीज इंडिया में एक डाइंग जॉनर था। बहुत पहले 1990s में शाहरुख खान से ये जॉनर शुरू हुआ था। शाहरुख खान, सलमान काफ़ी ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉइट हो गया था दिस रोमांटिक कॉमेडी का जॉनर एंड आफ्टर दैट वंस द गर्ल वाज विद द मैन देन केम द न्यू एरा ऑफ चॉकलेट बॉयज, दीज रणबीर कपूर एंड कार्तिक आर्यंस, जिन्होंने आके धूम मचा दी थी विद ऑल द रोमांटिक कॉमेडी एंड चिक फ्लिक फिल्म्स दैट केम इन द बॉलीवुड। एंड देन केम एन एरा जब कार्तिक की मूवीज भी फ्लॉप होने लगी, और जब लव आजकल 2 फ्लॉप हुई थी देन आई थॉट कि प्रोबेबली दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट रोम कॉम फिल्म ऑफ बॉलीवुड, और इसके बाद आई डोंट थिंक कोई डायरेक्टर हिम्मत भी होगी इस जॉनर को एक्सप्लोर करने के लिए बिकॉज आई थॉट द ऑडियंस वाज डन विद इट। बट फाइनली लव रंजन हैज कम अप विद अ रोम कॉम स्टारिंग रणबीर एंड श्रद्धा एंड दिस मूवी वाज बियॉन्ड व्हाट आई एक्सपेक्टेड बिकॉज लाइक एनी अदर डाइंग रोम कॉम जॉनर की फिल्म्स मुझे लगा था कि ये फिल्म भी फ्लॉप होने वाली है। इसमें कुछ बोरिंग जोक्स होंगे, एंटरटेनिंग नहीं होगी, एक्टिंग भी ओके होगी एंड रणबीर कपूर इज नो लॉन्गर इज ही अ चॉकलेट बॉय बिकॉज देयर आर सो मेनी न्यू अपकमिंग एक्टर्स हु कैन एक्चुअली फिट इन द रोल, सो आई डिड नॉट एक्सपेक्ट रणबीर कपूर टू एक्ट दिस वेल इन दिस फिल्म। सो हियर आई एम समक्ष मल्होत्रा talking the positive and the negative aspects of the film TJMM, so you can ultimately decide if you should watch this film in the theaters near you or not. ऑल्दो मेरा सजेशन तो यही रहेगा दैट आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम एक बहुत ही अच्छी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म आई है जिसको आप फैमिली के साथ जाके देख सकते हैं बिकॉज यू नो जितनी पुरानी रोम कॉम्स थी आज से पहले बिफोर TJMM मोस्ट ऑफ द रोम कॉम्स वर मैसोजिनिस्टिक, दे वर फुल ऑफ कॉमेंट्स बाय मेल परफॉर्मर्स एंड यू नो दैट गेव अ टोन ऑफ पेट्रियार्की। बट व्हेन इट कम्स टू दिस फिल्म इसमें कुछ पार्ट्स ऑफ फेमिनिज्म हमें नजर आ रहा है बिकॉज अ टेक ऑन मॉडर्न एज रिलेशनशिप्स इज शोन इन दिस फिल्म. Or in this film there are family oriented men, or you can also say mama's boy, and here there are women who actually wants to pursue their career, who keep their career before marriage. यही सेम चीज हमने देखी थी जुग जुग जियो में भी, but that was a family drama, not a rom-com movie. Kudos to Love Ranjan for actually, you know, executing the scripts in a manner that the audience in the present scenario would enjoy and not sticking to movies like बद्री की दुल्हनिया जहाँ पे इतनी बुरी एक्टिंग और इतनी बुरी स्टोरी राइटिंग के साथ स्क्रिप्ट्स को एग्जीक्यूट किया जाता था. This is the modern take on relationships. The movie starts with रणबीर कपूर breaking up in the most modern way and कैसे फर्जी कैफे इन गुड़गांव के सामने उनका एक सीन आता है and that gives you a reference to a syntax later in the film how the songs are the star of the movie. फर्स्ट हाफ की बात करें इस मूवी की, डेफिनेटली थोड़ा बोरिंग था बिकॉज फर्स्ट हाफ में दे हैव टू टेल अ लॉट ऑफ स्टोरीज, टेल अ लॉट ऑफ प्लेसेस, पीपल एंड देन कंबाइन ऑल ऑफ इट टुगेदर, बट दैट वाज मेड अप बाय द सेकंड हाफ ऑफ द फिल्म व्हिच वाज रियली एंटरटेनिंग. व्हेन इट कम्स टू द सेकंड हाफ ऑफ द मूवी, फर्स्ट हाफ में जहां हमें सिर्फ प्रोटैगनिस्ट की स्टोरीज में ही इन्वॉल्व रहती है सारी ऑडियंस, सेकंड हाफ में उनकी फैमिलीज भी इन्वॉल्व हो जाती है व्हिच मेक्स इट even more entertaining. Bonnie Kapoor is here, Dimple Kapadia is here, and their natural comedy element, their physical comedy is also pretty entertaining when it comes to the movies. But that does not mean कि इसके entertaining parts बहुत entertaining है, और that also means कि इसके boring parts जो film के first half में थे and some monologues and dialogues in this film are extremely intolerable. But the movie becomes a bit better because of the second half of the film. इस movie में बस्सी, the famous comedian बस्कर बस्सी जिसके शो आपने देखे होंगे और वो भी इस मूवी में है. Although I'm not really sure why was he taken. Of course, नए टैलेंट को देना चाहिए काम, but a lot of other actors could have fit into this side character. For example, Sunny Kaushal, who had such an amazing debut film, could have been really suitable for this OP role. But okay, Bassi has a lot to learn. This is his debut movie, and we see these influences coming in the films. Like Prajakta Kohli has her own show now on Netflix, and she was also as a side character in the movie Jug Jug Jio, and similarly Bassi is taken as a side character in this film TJMM. Probably a lot of people will get to know about it. Earnings of the film would probably increase
because of this decision, but of course there are a lot of other things that the director has to see. So next time when you're casting an influencer or a comedian, make sure you train them well, so you know you don't feel like कि हाँ आप उस comedian को ही देख रहे हो, you feel that you're watching an actor. And इस movie में बस्सी तो है, रणबीर, श्रद्धा भी है, and modern day actors भी हैं यहाँ पे, but the one and only cameo by a very famous actor and actress who have really ruled on this genre a couple of years ago is also there. I won't tell you who because that'll be a spoiler for you then. वो आपको थिएटर में जाके पता चल जाएगा कि किसका cameo है, and that is definitely very much enjoyable. So this modern age relationships which involves a lot of families has a great climax. Songs इस फिल्म के बहुत ज़्यादा अच्छे हैं except for the ठुमका song. I think I enjoyed all the choreographies. All the songs were thoroughly enjoyable on the big screen after so long, because जब पहले हम movies देखते थे, you know, songs के time पे we either used to take a loo break, we go buy popcorns or we use our phones. But these were the songs जहाँ पे मैं एकदम theater में immersed था. Not just because of the choreography but also because how the camera angles have shot. So which brings me to the cinematography and tech elements of the film, that it's such a beautiful, gorgeous film and it doesn't really feel like, you know, करण जौहर की फिल्म जैसे बहुत ही ज़्यादा अमीरी दिखाती हैं, और so goes for Zoya Akhtar when it comes to दिल धड़कने दो and जिंदगी न मिलेगी दोबारा. This was a film that fairly felt true as well, because the scenes that have been shot at beautiful places and beautiful faces of the people are visible. So that is where I believe that yeah, the cinematography is amazing, the direction is up to the mark. One thing in the tech that I would want to point out is editing of the first half could have been a bit crispier. The dialogues that were written like a monologue of a Kartik Aaryan film could have been shorter and been said in a way कि you know audience को पसंद आए. Overall, if I talk about the film, it's actually enjoyable thoroughly, and you can genuinely go ahead with your friends, with your family to the movie theaters near you. That will be my recommendation, and watch this film in the theaters, because after a very long time, a very light-hearted film जिसमें आपको अपना दिमाग लेके जाना नहीं पड़ेगा मूवी के अंदर, you can leave it outside the theaters but still enjoy this amazing romantic comedy film of Hindi cinema after a very long time in the theaters near you. So thank you so much for joining in. That was all for the day. If you liked watching my video, do remember to hit the thumbs up, and while subscribing to my channel, do remember to press the bell icon so whatever I upload next, you get the notifications first. Also share this video with all the Hindi cinema lovers that you know of. That's all for the day. Do remember to follow me on Instagram and Twitter. The handle is Samaksh Vivo. Thank you so much. Signing off.